the students of class +1 फिजिक्स अगेन आपका फिर वेलकम। जो टॉपिक है हमारा एनालिसिस पार्ट सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में हमने इसको एरर एनालिसिस में टाइप्स ऑफ एरर, सोर्सेज ऑफ एरर, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में डिस्कस किया था। एंड जो सेकंड जो पार्ट है कि हमने एरर को मेजर कैसे करना है, ठीक है, या उसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है एरर को। तो एरर कैन बी कैलकुलेटेड मेजर, उसको हम नंबर 1 क्या लेंगे एरर को, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर एंड सेकंड mean absolute error, and third relative error। या उसको हम कह सकते हैं परसेंटेज एरर, और यू कैन से फ्रैक्शनल एरर। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? Absolute error, the magnitude of the deviation of any result of the measurement of a quantity from the mean of the measured value. Okay, the magnitude of the deviation of the result of any measurement from the mean of the measured value. Okay, the difference between the mean of the measured value and the individual measured value, दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या लेते हैं, absolute error. Suppose that let a quantity A be measured n times. Okay, हम कोई क्वांटिटी A मान लेते हैं जिसको हमने n टाइम मेजर करना है, एंड लेट A1, A2, A3 and so on up to An be the measured value. Okay, then what is the mean? Mean of the measured value Am, और इसको आप इस ऐसे भी नोट कर सकते हैं, इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस एंड सो ऑन अप टू An डिवाइडेड बाई n. दिस इज द मीन of the measured value, and which is equal to 1 upon n summation I is equal to 1 to n. इसको मैं ऐसे ही मैथमेटिकली डिनोट कर सकते हैं बाय डेफिनेशन। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? बाय डेफिनेशन डेल्टा ए 1
डेल्टा मीन्स वेरी स्मॉल, ठीक है। जो डिफरेंस आएगा एरर उसी को काउंट करेंगे, वेरी स्मॉल नंबर्स। तो डेल्टा A1 इज इक्वल टू, what is the definition? The magnitude of the mean and the individual measure value। जो फर्स्ट मेजर वैल्यू आपके पास A1 है और उसका मीन आपके पास क्या है हमारे पास AM। डेल्टा A2 इज इक्वल टू मीन ऑफ सेकेंड, डेल्टा A3 is equal to average of A3 and so on. Delta AN is equal to the magnitude of AM minus AN. These are called absolute errors. Okay. And second क्या था हमारे पास? Mean absolute error. What is mean absolute error? And second is mean absolute error. It is defined as the mean of all the absolute error। जब हमने एब्सोल्यूट एरर जो निकाला उन सभी का मीन इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर एंड विच इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस एंड सो ऑन अप टू डेल्टा AN डिवाइडेड बाई N। ओके, एंड कैन बी 1 upon n, I is equal to 1 to n delta AI. This is the mean absolute error। और इसको mean absolute error को it is also called final absolute error भी कह लेते हैं। इट मीन्स दैट जो हमारे पास जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा, तो फाइनल रिजल्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा AM। ओके, दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर करना है, उसका फाइनल रिजल्ट जो आपके पास आएगा A प्लस माइनस डेल्टा AM। इट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको फाइनल एब्सोल्यूट एरर भी कह लेते हैं। ओके, एंड थर्ड इज रिलेटिव एरर। सपोज दैट थर्ड रिलेटिव एरर। ओके, इसको हम पहले कर लेते हैं। रिलेटिव, व्हाट इज रिलेटिव एरर, या उसको परसेंटेज एरर क्या लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन ऑफ द मेजर वैल्यू। मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर क्या था हमारे पास, डेल्टा AM divided by AM। This is the mean absolute error and this is the mean of the measure value। It is called relative error। फिर इसको परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज relative error that is equal to delta AM divided by AM multiplied by 100। This is the relative एरर या फ्रैक्शनल एरर, या उसको हम परसेंटेज एरर भी कह लेते हैं। ये था हमारे पास एरर मीन्स एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, और रिलेटिव, परसेंटेज और फ्रैक्शनल एरर क्या है।
ठीक है, तो लास्ट में एक बार फिर उसको हम थोड़ा सा रीडिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द mean of the measure value and the individual measure value, and mean absolute error, the mean of all the measured value, all the absolute error का सभी का जो मीन आएगा उसको हम मीन एब्सोल्यूट एरर कह लेते हैं. और मीन एब्सोल्यूट एरर इज आल्सो कॉल्ड द फाइनल एरर. ठीक है, और बस अगेन जो प्लस माइनस का जो साइन आएगा उसको हम इग्नोर करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव इसमें कंसिडर करेंगे. रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर, द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू. चलिए इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए वाटर is found to have the value 1.29, 1.33, 1.32, 1.34 and 1.35. The refractive index of water found to have the values. These are the values. Find mean of the measured value, measured value एक तो आपने मीन निकालना है, दूसरा आपने हम इसमें फाइंड आउट करेंगे एब्सोल्यूट एरर, और थर्ड इज रिलेटिव एरर. ओके, these are the 5 values. Measure value. Now what is the mean of the measure value? इसको mu is equal to mu1 plus mu2 plus mu3 plus mu4 plus mu5 divided by 5. Okay, and which is equal to 1.29, 1.33 plus 1.32 plus 1.34 plus 1.35 divided by 5. इन सभी का सम करेंगे एंड विच इज इक्वल टू 6.63 divided by 5. 9, 11 and 14, 23. 6.63 इसका वैल्यू रहेगा. इसको डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.326. इसको राउंडेड ऑफ कर दे, दैट इज इक्वल टू 1.33. ठीक है, इस वैल्यू को राउंडेड 6 को 3 लिख लेंगे इसको. दिस इज द एवरेज of the measured value. What about the absolute error? You know what is the definition? So delta mu1 is equal to the magnitude of mu m minus, या delta mu लिख लेते हैं उसको हम पहले जो है माइनस mu1 निकालो उसका. ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 1.33 माइनस 1.29 एंड विच इज इक्वल टू 0.04 mu delta mu2 is equal to 1.33 minus only the magnitude minus 1.33 and which is equal to 0. Delta mu3 is equal to 1.33 minus 1.32 and is equal to 0.1.
delta mu 4 is equal to 1.33 minus 1.34, and which is equal to again 0.01, only magnitude. Okay, and delta mu 5 is equal to 1.33 minus 1.35, and is equal to 0.02. Okay, so therefore absolute error, तो आगे आपके पास absolute error, mean absolute error, delta mu is equal to 0.04 plus 0 plus 0.01 plus 0.02 1 plus 0.02 divided by 5, and which is equal to 0.08 divided by 5, and is equal to, अगेन इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 0.016, और इसको राउंडेड ऑफ कर देते हैं, दैट इज इक्वल 0.02. दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर. ओके, सो व्हाट विल बी द रिलेटिव एरर? तो रिलेटिव एरर क्या है इसमें, डेल्टा इज इक्वल टू, डेल के साथ इसको डिनोट कर लेते हैं, स्मॉल डेल के साथ. तो क्या था उसका डेफिनेशन, डेल्टा म्यू डिवाइडेड बाई जिसका मीन है डिवाइडेड बाई दिस मीन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, एंड अगेन विच इज इक्वल टू 0.02 डिवाइडेड बाई, और इसके हमारे पास 1.33, जो मीन था हमारे पास मेजर वैल्यू का 1.33 है. ओके, एंड विच इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे 0.015, और इसको आपने परसेंटेज में निकालना है. इफ यू in the percentage, then 0. equal to 0.015 multiplied by 100, and which is equal to 1.5%. This is the absolute error, mean absolute error, and the relative error.